हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज है डे 3 इन जॉर्जिया। सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड मैं बनाने वाली हूँ अभी सम पोहा फॉर ब्रेकफास्ट एंड इसके बाद विल सेट आउट टू एक्सप्लोर ओल्ड तिब्लिसी टुडे। तो सबसे पहले आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द क्लॉक टावर और द लीनिंग टावर ऑफ तिब्लिसी। This was just around 400 to 500 meters from our Airbnb. So we decided कि सबसे पहले हम क्लॉक टावर देखेंगे and then we'll go ahead and explore the Freedom Square area. वैसे तो ये क्लॉक टावर दिखने में बहुत पुरानी लग सकती है, but this was only added in 2011. और इसकी सबसे खास बात ये है कि in every hour there is an angel mannequin that comes out to strike the bell just like this. Wasn't this really cute? Now if you want to see the complete puppet show with music, do come here at either 12 p.m. or 7 p.m. in the evening hours. The street around the clock tower is really vibrant and has its own charm. You get a lot of options to buy souvenirs, postcards and paintings at really affordable rates here. There's also this beautiful church which is one of the oldest in the city. क्लॉक टावर देखने के बाद हम फ्रीडम स्क्वायर की तरफ जा ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ी इस छोटी सी सोवेनियर शॉप पे एंड आई बॉट रियली गुड स्टफ एट वेरी मिनिमल रेट्स। अगर आपको भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए यहाँ से गिफ्ट्स लेके जाना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ओल्ड तिब्लिसी वाला एरिया एक्सप्लोर करें। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं ऐसे जहाँ से आपको बहुत ही मिनिमल एंड अफोर्डेबल रेट्स में सारे सोवेनियर्स वगैरह मिल जाएंगे। And for some reason, this particular area in Old Tbilisi kept reminding me of Indranagar in Bangalore, maybe because of these huge trees and the layout. But yeah, if there are any Bangaloreans out there, let me know if you felt the same. So after walking for a while, we have reached the Freedom Square area. यहाँ पे आपको स्पार दिख जाएगी. You also have options to rent this fancy cars if you would like to go around the city. You can also see the Freedom Monument up there, with the golden statue of Saint George slaying his dragon. Now Freedom Square is situated at the heart of Tbilisi and with 6 streets branching out from the square, including the well-known Rustaveli Avenue. There are many options for luxury shopping here with various brands available. क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने डिसाइड किया कि विल बी गोइंग टू द गैलेरिया मॉल टू हैव आवर लंच एंड बहुत सारी ऑप्शंस देखे बट ऑफ कोर्स वी एंडेड अप हैविंग अ लंच एट KFC. एंड ड्यूरिंग आवर स्टे इन जॉर्जिया जब भी हमें समझ नहीं आता था कि हमें क्या खाना है वी वुड आइदर ऑप्ट फॉर बर्गर किंग, मैकडी और KFC एंड वी रियली फाउंड दैट टू बी अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन. विद इन 700 to 800 2 जन का खाना मिल जाता था. After waiting for some 10 to 15 minutes, our food has finally arrived. Here's what we ordered: some chicken nuggets, French fries, Pepsi, and a burger. तो लंच करने के बाद वी वांटेड टू एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड रुस्तावेली एवेन्यू बट क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, इट वाज पीक समर, सो वी कुडंट रियली वॉक फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. हम ऑलरेडी टायर्ड हो चुके थे आफ्टर वी रीच द पार्लियामेंट ऑफ जॉर्जिया. सो फ्रॉम हियर वी जस्ट टुक अ यू टर्न, headed back to our Airbnb, took some rest and then again शाम में बाहर निकले. So here's a tip, अगर आप प्लान कर रहे हो ना जॉर्जिया आने का, प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त जो कि यहाँ पे पीक समर सीजन होती है. So after resting for a while and restoring back some energy, we are now going to the Holy Trinity Church or the Tatsminda Samiba Cathedral, which is around 1.8 kilometers from our Airbnb. Since the cathedral is located on top of Elia Hill, तो आपको थोड़ी चढ़ाई करनी होगी, but the pathway is mostly flat and the views make up for it. Another reason we preferred visiting the cathedral during the evening hours is that the entire city is gonna look really gorgeous during sundown, and the church would also be beautifully lit up. After 30 minutes walk, we finally reached the main gate of the church. The car parking is right outside and there is also a small cafe right around the corner. And this is how the church looks right through the entrance itself. Like we were taken aback by the grandeur of the entire architecture of this church. It was beyond beautiful.
Let me add some shots for you guys here so you can see the beauty of this place through my lens. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, in my heart. And as I said before, the views of the city from here is just unmatched during sundown. Look at the gorgeous sky. And the church, well, that's beautifully lit up too. So if you're here in Tbilisi, you should not miss visiting this place, especially during the sunset, for a magical experience. I hope you like the video so far. Let me show you another fascinating thing about Georgia. पूरी सिटी में आपको कई जगहों पे ऐसे natural drinking water मिल जाती है, so you can just fill in your bottles and save some bucks. While heading back to our Airbnb, we took the stairs downhill to stop at this beautiful park. Tbilisi में आपको हर जगह ऐसे छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे पार्क्स मिल जाएंगे. So if you have kids and have been planning to visit Georgia, you should definitely visit Tbilisi. Your kids are gonna love this place. So that's all for today. In the next vlog, we're gonna explore the Las Vegas of Georgia. That's Batumi. So please stay tuned and take good care of yourself. Bye.